Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel. Today in this video we'll learn about the important nursing care plan on pancreatitis. This is very important for the medical surgical nursing care plans. तो आइए देखते हैं pancreatitis का nursing care plan. Before learning the nursing care plan, we first know what the pancreatitis is. A short introduction of pancreatitis. Yeah, pancreatitis is a disease in which pancreas become inflamed. पेनक्रियाटाइटिस एक डिजीज कंडीशन जिसमें पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है. द पेनक्रियाज इज ए लार्ज ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक एंड नेक्स्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन. पेनक्रियाज जस्ट टू मेन थिंग्स. पेनक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड होता है जो स्टमक के पीछे और स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट होता है. और इसके जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसके मेन फर्स्ट इट रिलीज ए पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प यू डाइजेस्ट फूड. मीन्स इसका जो मेन फंक्शन है जो डाइजेशन में हमें हेल्प करता है. दूसरा इट रिलीज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दीज हार्मोन हेल्प योर बॉडी कंट्रोल हाउ इट यूज फूड फॉर एनर्जी. इसके साथ साथ इंसुलिन ग्लूकागोन सीक्रेट करता है जो जो भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं in metabolism. Next type of pancreatitis here. The two types of pancreatitis are acute and chronic. Here, acute pancreatitis is sudden inflamed that lasts a short times. It can range from the mild discomfort to the severe. Means जो acute pancreatitis sudden onset होता है और कम समय के लिए होता है. Second, chronic pancreatitis here is a long lasting inflammation. It most often happen after an episode of acute pancreatitis. क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस एक लंबे समय तक पेनक्रियाज में होने वाला इन्फेक्शन है और ये अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बार बार अटैक मीन्स रिकरेंस ऑफ द अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस लीड टू द क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस. नेक्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स एयर साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस. मीन्स सिम्टम्स ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एयर फीवर, हाई हार्ट रेट, nausea and vomiting, swollen and tender belly, pain in the upper part of the belly that goes into back, eating may be make towards especially food high in fever. Next symptoms of chronic pancreatitis. Here the symptoms of chronic pancreatitis are similar to those of acute pancreatitis but may also have a constant pain in upper belly that radiate to back. This pain may be disabling. Next, diarrhea and weight loss because of pancreas not releasing enough enzyme to break down food. Next, upset stomach and vomiting. नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक नर्सिंग केयर प्लान ऑन पेनक्रियाटाइटिस. अभी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन. ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस होगा. पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज एज एविडेंस बाय द पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट सेकंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू द एक्सेस वोमिटिंग एज एविडेंस बाय द पेशेंट skin that is dry. Next, low grade fever related to infectious process as evidenced by vital sign examination. Next, weight loss related to anorexia as evidenced by the patient's verbal report. These are nursing diagnosis here in the nursing care plan. तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट nursing care plan. Here this is the first nursing care plan here. In this here, assessment, diagnosis, objectives, intervention, rational implementation and evaluation phase of this nursing care plan. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट असेसमेंट इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा. हेयर असेसमेंट में हेयर सब्जेक्टिव डाटा दैट पेशेंट इज सेइंग दैट हैविंग पेन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट इज अनकंफर्टेबल ड्यू टू पेन. After these assessment we write a diagnosis that the pain, here this is nursing diagnosis, that pain related to inflammation of the pancreas as evidenced by the patient's facial expression. ये हमारा diagnosis है. नेक्स्ट गोल देखते हैं ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस और रिलीव पेन. एयर नेक्स्ट इंटरवेंशन एंड रेशनल फॉर दिस diagnosis. एयर असेसमेंट
Intervention number first, assess for the degree of pain intensity and interval of the pain here. नेक्स्ट प्रोवाइड रेशनल हो गया यहाँ पर फॉर प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो हम एक्शन कंप्लीट कर चुके हैं असेस्ड फॉर द डिग्री ऑफ पेन इंटेंसिटी एंड intervals of the pain. Next, provide comfortable position here rational for this for comfort or here implementation means जो हम एक्शन कर चुके means provided comfortable position to the patient. Next, monitor the vital sign here for check and severity. Here monitor the vital signs. Next, number monitor the lab value to check any severity. Monitor the lab value. Next, administer of analgesics as mepardin here to reduce pain. Here rational for this administration of analgesic done here. Mepardin is given to the patient. तो ये थे यहाँ पर इंटरवेंशन टू रिलीव पेन एंड दियर रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन. इंटरवेंशन में जो हम प्लानिंग करते हैं वो यहाँ लिखी जाती है रेशनल में, इसके स्पेसिफिक रीज़न फॉर दिस प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशन. और इम्प्लीमेंटेशन में जो एक्टिविटी जैसे प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, तो यहाँ पर प्रोवाइडेड मीन्स हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर चुके हैं. तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो एक्टिंग फेज होती है, इसको हमको आफ्टर केयर यहाँ पर राइट डाउन करना है. तो ये इंटरवेंशंस देने के बाद हम पेशेंट का एवेल्यूशन देखते हैं यार. नाउ एवेल्यूशन फॉर दिस यार द पेशेंट रिपोर्ट द लेस पेन एंड पेन इज रिलीव्ड नाउ. तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान. यार पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन of pancreas as evidenced by the patient's facial expression. Next देखते हैं nursing care plan number second. Here this is the second nursing care plan. Here diagnosis for this year dehydration due to excess vomiting as evidenced by the patient's skin that is dry, mucous membrane dry. तो ये देखते हैं फर्स्ट इसका नर्सिंग असेसमेंट. In nursing assessment, subjective data, the patient is having nausea and vomiting. Next, objective data, dehydration due to vomiting. तो ये हमारा assessment होगा. On the basis of this assessment, we read the nursing diagnosis here, dehydration due to the excess vomiting as evidenced by the patient skin that is dry and mucous membrane also. ये हमारा यहाँ पर डायग्नोसिस होगा. नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. नेक्स्ट इंटरवेंशन एंड रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन. ईयर इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट ईयर assess for the degree of dehydration, a rational for this for prompt interventions and implementation assess for the degree of dehydration. Next, monitor vitals in here for check the check up the severity of the disease condition here. Implementation here monitored sign. Next, number third intervention, provide a fluid diet to the patient here. Intervention to maintain fluid level of the body here. Next, implementation provided fluid diet. Next, advise the drink plenty of water. Here rational for this to maintain fluid and electrolyte balance here. Advise to the drink plenty of water. Next, administer IV fluids here. Same action to maintain fluid and electrolyte balance here. Administered IV fluids to the patient. After providing these interventions, we see the evaluation for this disease. Nursing care plan here. Evaluation that the fluid and electrolyte balance is maintained here. तो ये था हमारा evaluation. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड फॉर पैनक्रेटाइटिस. ईयर डायग्नोसिस फॉर दिस ईयर लो ग्रेड फीवर related to infectious process as evidenced by the vital sign examination. देखते हैं इसका assessment. Here first
subjective data, the patient saying that feeling warm. Next objective data here, the patient having low grade fever here. Diagnosis for here how here low grade fever here, sorry, low grade fever related to infectious process as evidenced by the vital sign examination here. Goal for this or objective for this here to maintain body temperature normal level. Next intervention and rational for this here, assess intervention and rational and implementation also here. Assessment of the level of pyrexia and interval and chills here to prompt intervention. Rational and implementation assess the vital sign and level of pyrexia. And next intervention monitor the vital sign here to check and any emergency condition here. Implementation monitor the sign. Next provide calm and quiet environment, calm and cool environment to reduce the body temperature. Provide a calm and cool environment. Next administer antipyretics medications here as prescribed. इसका रेशनल होगा to reduce and maintain temperature and air administered. इम्प्लीमेंटेशन में administer antipyretics as prescribed. तो ये होगा यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस हम देखते हैं नेक्स्ट इसका एवेल्यूशन क्या होगा. नाउ फीवर इज reduced और patient feel less fever here. ये था diagnosis number third. Next number fourth nursing care plan diagnosis here. Weight loss related to anorexia and evidence by the patient verbal reports here. Assessment देखते हैं first. Subjective data, patient saying that here that having the no hunger here. Next objective data here, patient having a weight loss. Next diagnosis weight loss related to anorexia as evidenced by the patient's verbal report here. Next goal or objective to maintain body weight and to maintain appetite. Next intervention rational and implementation for this year. Intervention number first, assess for the like and dislike of foods of the patient here to give feed accordingly. Next implementation, assess for the like and dislike. Next second intervention, assessed weight in every 2 days here for improvement or reduction. Next here implementation, assessed weight in every 2 days. Next number intervention, provide frequent small diet to patient here to increase digestion and provided frequent small diet and meal. Next number intervention, provide patient a favorite food to him here to increase appetite. Here implementation, provide patient favorite food to him. The intervention. After providing these interventions, we write the here evaluation. Now body weight here maintained and appetite is also maintained. ये था number 4 care plan on pancreatitis. तो फ्रेंड्स एक बार फिर देखते हैं. फर्स्ट हमारा था केयर प्लान, ये दूसरा केयर प्लान, ये थर्ड केयर प्लान एंड ये फोर्थ केयर प्लान. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन पैनक्रेटाइटिस. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड share this video with your friends and subscribe my YouTube channel on nursing file year preparation for nursing competition exam and press bell icon also. Thank you.